there are 2 other films being made on the same subject. So what is it that attracted you guys towards this? It was an emergency, so we did it. Our projects was something which we conceived about 2 years ago, and it was never about, we didn't know at that time whether somebody else is making a film on this topic or not. We always felt that this topic is something which is just not explored in cinema. Needlessly, it's not being done. It felt that, you know, it was a really good space to try to explore that era, and it would create a, मुझे एक होता है ना खौफ का माहौल, वो इमरजेंसी के टाइम पे खुल के बाहर आ गया था। अभी किसी ने सवाल पूछा सेंसरशिप के बारे में, तो अगर आप ये सोचिए कि अगर इसका जो डंडा है, इसका जो अथॉरिटी का जो एक है इस बात पे कि आप पिक्चर सिर्फ हमारे हिसाब से बनाइए, अगर ये आप एक्सट्रीम पे ले जाएं तो वो शायद इमरजेंसी के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, बिकॉज उस टाइम पे तो डायरेक्ट टेलीविजन न्यूज़ जो आप यहाँ कह रहे हैं, जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, उस सब पे एक आदमी बैठ के सेंसर पे डिसाइड कर रहा है कि क्या ये बात हम बाकी इस कमरे से बाहर ले जा सकते हैं कि नहीं। तो इट सीम लाइक अ वेरी गुड antagonist, the environment itself. It was a very dark antagonist. So we thought this would be a really interesting space to write a thriller within, which is why we chose this era. At that time, we did not know who else is making a film on emergency, or which I believe is coming a little later anyway. And we didn't make the movie about the emergency. Just we are in the emergency, so the thriller is happening. You know, the characters are getting manipulated. You know, with all the situation. Yeah, we're not being preachy about emergency at all, and that's it. Yeah. इस सवाल का मैं एक तोड़ देता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप हर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछते होंगे कि एक फलाना लव स्टोरी है तो भी एक लव स्टोरी बना रहा है, एक थ्रिलर है तो वो। इसका तोड़ ये है कि जितनी कहानियाँ होती है ना ज़िंदगी में, वो सीमित है, उसका फॉर्मूला सीमित है। कहानी को पेश करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लव स्टोरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है कल्लू टू कालिया फॉर्मेट, मतलब 0 टू हीरो फॉर्मेट। ये अलग अलग फॉर्मेट्स के कुछ गिने चुने 20-25 होंगे। अब बात अहमियत वाली बात यह है कि एक डायरेक्टर और एक कहानी बोलने वाला किस तरह से उस चीज़ को पेश करता है। तो चाहे वो 100 फिल्में बने इमरजेंसी के बैकड्रॉप पे, या आज़ादी पे, या किसी पे भी, it all depends on how it has been portrayed and told to you. So this is our way of telling you the story. Somebody else might have a different way of speaking, but doesn't mean both the plots and everything is the same. Yeah. Hi Navneet sir, I'm Sunil from Movie Talkies here. Yeah. KK sir just told about his preparations as an actor for this movie, and what preparations you did as a director for this 40 years ago बहुत काम किया यार story. मेरे को एक्यूज किया जाता है कि मैं काफी मेटिकुलस। Can you hear me? Yeah. I'm often accused of this, that, you know, I'm very meticulous and I'm very, I take my time in trying to, you know, do any particular thing. So, yeah, I mean, in terms of preparation, we wrote down the entire script. I wrote down backstories for each character, even if it was an extra. We storyboarded pretty much everything. I researched the era. I met various journalists. One person I'd like to thank in particular is Mr. Kuldeep Nair, जिन्होंने बहुत मेरे को बताया अपने उस ज़माने। He's a very famous journalist. I'm sure you as a community are very familiar with him. दिल्ली में है वो इस टाइम पे, and he's quite healthy and he's wonderful. तो उन्होंने मेरे साथ ऑलमोस्ट नहीं तो 3-4 दिन बिताए, और अपने इमरजेंसी के बारे में जो जितने किस्से थे वो हमें उन्होंने बताए। दूसरा एक और जर्नलिस्ट थे, सुहेल हाशमी, जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। सो आई काइंड ऑफ वांटेड टू गेट अ सेंस ऑफ कि जो हमारी रिसर्च में हमको पता लगा कि जब इमरजेंसी लगी थी तो कोई कुछ बोला नहीं। अब ये बात बहुत हैरानगी की है कि कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन ये बात सच नहीं हो सकती, कोई कुछ बोला नहीं। कुछ तो लोग होंगे। वी नो दैट JP नारायण वाज देयर, वी नो दैट देयर वाज अ एंटायर काइंड ऑफ मूवमेंट इन द कंट्री। तो उसकी खबर छपी ही नहीं, उसकी बात सामने आई नहीं, लेकिन जब लोगों से बात की तो पता लगा कि वो आवाज़ें किस तरह से हिस्ट्री से मिटा दी गई हैं। सो आई थॉट दैट ब्रिंगिंग आउट समथिंग एज this, bringing on this tangent in the story
कि कैसे किस आइडिया को वाइप कर दिया जाता है. तो वहाँ से जो आइडिया है सीक्रेट्स का, कॉन्स्पिरेसी का, वी स्टार्ट डेवलपिंग इट फर्दर फ्रॉम देयर. तो अगेन बहुत सारे नुआंसेस होते हैं. ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च. इन टर्म्स ऑफ माई वर्क विद माई एक्टर्स, मेरी मदर की पुरानी साड़ियाँ की फ़ोटो ले लेके मैं कीर्ति के साथ बैठता था कि ये उस टाइम पे इस तरह से ड्रेसअप होती थी. और छोटी छोटी बातें होती हैं, जिस तरह उस ज़माने में आईब्रोज जो थे औरतों के थोड़े से ज़्यादा थिक होते थे कंपेयर टू जो आज हम पतले पतले आईब्रोज देखते हैं. तो दिस इज़ अनदर थिंग दैट वी डिस्कस्ड एंड वी वेंट विद दैट इज़ अ वेरी स्लाइट सॉर्ट ऑफ चेंज in the character. So there were a lot of small nuances that we worked on, and yeah, I mean it's a long process. It'll take me another 2 years to explain to you everything that I did in the last 2 years. But thank you for that question. Yeah. KK sir, you have also worked in like masala movies also, and also have given some superb performances in meaningful cinema. सलाम में सुपर नहीं था. नहीं sir, Sing is Bling अलग थोड़ा सा, और the kind of cinema you do also meaningful one. So what you enjoy doing more as an actor, and what मतलब resembles you more as a personality? यार जहाँ एक्टिंग हो वहाँ मुझे सब कुछ पसंद होता है, ऐसा कुछ है नहीं. एक्चुअली अभी अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया, मैं उसका ही उत्तर दे देता हूँ आपको, है ना, बेटर है. देखो क्या होता है ना, मेरे पास एक टैलेंट है कि अगर आप मुझे एक बक्से में डालोगे 2 महीने के लिए, मैं उसमें काम निभा के मैं निकल जाऊँगा वहाँ से और दूसरे बक्से में चले जाऊँगा. अब उस बक्से को अगर आपको पकड़ के रखना है तो आपका प्रॉब्लम है. तो चाहे वो सिंग इज़ ब्लिंग हो या चाहे वो ब्लैक फ्राइडे हो या कोई भी हो, अलग अलग बक्से हैं. वो मेरा काम है एज एन एक्टर निभाना, उसको मैं निभा लेता हूँ और फिर वहाँ से निकल लेता हूँ. तो मैं ये समझता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, कुछ नहीं है. तो अगर आपके दिमाग में भी ना हो तो बेहतर है, क्योंकि कलाकार का काम ही ये होता है. आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि अरे आपने सुगम संगीत क्यों गाया, आप तो क्लासिकल गाते हैं. अब यार अब छोड़ो यार. My question is that what you enjoy working on more? I enjoy acting, भैया. Okay. I don't mind. If you ask me reasons why I did Sing is Bling, okay fine. I have such long hair, so I did it. So as simple as that. So I enjoy working. I enjoy working in different formats of films and all kinds of films. And that's the whole thing. Whether it's one day or a 5-day test match or a T20, doesn't matter. I enjoy playing. So as simple as that. अब ये मत कहना कि आपने T20 में क्यों किया, वो तो क्लासिकल नहीं है. अब यार वो रहने दो. Kirti, can you please share something about your character in the film? हाँ. Essentially a rebel, and a rebel Fasadi. Huh? Fasadi. He's a rebel basically. He's a guy who understands the system, and उसने घोट के पी ली है, जानता है कि अभी एक ही तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है. A very sharp human being, and Govind is a guy who knows what to do in a period like this and how to get his job done. And the job getting done might be unorthodox, might be not very pleasant, but he gets it done. And he's too sharp. He's in chess, he would be about 10 steps ahead of everybody. He's that kind of a man. Do you have any memories of the emergency? Do you have any memories of the emergency? I guess you were about 9 or 10. Do you have any Memories of the emergency. Personal memories. Emergency, I was too small then. Yeah. All I knew was that my parents, and through my parents, there as a kid you can sense fear. You can sense love, you can sense happiness very easily. So as a kid, yes, I did sense that element of fear in the atmosphere around. So if it was cold, it was slightly spine chilling. If it was hot, it was like burning the skin, kind of a feeling. Yeah. Hi KK, Simrita from Filmibeat. Talking about the kind of roles you do. You are a brilliant actor, and the way you're answering the questions, you have a very different and brilliant approach. Do you apply that approach while choosing your roles, or these kind of unusual roles, they choose you? Madam, I am like that only. I cannot analyze my own self. It's for you to do that. So if you ask me questions about myself and as Shakespeare has once said very famously, the eye sees not itself but by reflection. Okay? So I can't see my own eye. You have to tell me.
He's the Shiv's third eye. Questions about my persona, I have no idea. I'm like that only, as I said. But yeah, as far as choosing films are concerned, it's much like love. You don't know the reason as to why you fall in love, right? You don't measure the nose or measure the eyes, or you don't go about doing that. So something like that with every script that I read. When I read it, it sort of gets you into a bond with it, and I go ahead and do it. And sometimes I do it for a few 100 million reasons, a few 100,000 reasons. Sometimes I don't do it for that kind of reason as well. So yeah.